हेलो बच्चों। अब हम लोग आज 11th का टॉपिक पढ़ने वाले हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैथमेटिकल टूल्स कहा जाता है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज फिजिक्स को समझने के लिए 11th का वी नीड सम मैथमेटिकल कंसेप्ट, राइट, जिनको मैथमेटिकल टूल्स कहते हैं। उनमें हो गया जैसे वेक्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, and then concept of say calculus, basic concept, differentiation, integration. So here we will start today first concept, mathematical tool. First concept, that is called vector, right? So let me introduce first myself. Say I am Rajiv Gupta, ex FITG faculty, and I have experience of say 25 years in IIT-JEE and CBSE teaching. So for this vector, let's start vector. So for this vector we will need some quantity. Vector is a physical quantity. So first of all we will understand what is a physical quantity. So with physical quantity we can say a quantity which requires instrument to measure it. So all quantities which can be measured with the help of an instrument are called physical quantities. So at least one instrument is needed. For example, say if we have to measure height, width, then we need a meter scale. If we have to measure mass, then we need weighing machine, etc. Right? So if a quantity needs some instrument to measure it, then it is called a physical quantity. Now these physical quantities are of say two types. One is called scalar and another is called vector. Symbol, we have a freedom. We can choose any symbol to represent a physical quantity. That means if we are dealing with say some angle, then we can choose theta as symbol. So we can choose theta as symbol, right? So we can choose theta as a symbol, or say alpha angle, or say beta. So these are say physical quantities. So any letter we can use, any symbol we can use for a physical quantity. So suppose a physical quantity, we are choosing a letter P or Q as physical quantity. So suppose P is a physical quantity, right? So if P is a physical quantity, then we see that in physical quantity there must be two types of quantities. One is say numerical value, or one should be unit. Some quantities are say unitless, so it requires only numerical value. For example, number of persons, we need say counting. So some ratio, it is say unitless, but similar quantities ratio is a unitless, but it is still a physical quantity. For example, say relative density, etc. Right? So relative density is a physical quantity but it is a ratio of two densities. So unit is cancelled out, right? So it is a unitless. So but in case of say physical quantities, we usually see that it contains two type of quantities. One is called say numerical value, and the second one is say unit, right? So for example, say we are taking a physical quantity, say mass of 10 kg. So if we are taking say mass of 10 kg, then we will see that here this 10 represent numerical value and this kg represent a unit. So this is the physical quantity. So this is a physical quantity. So this kg is say unit and 10 is say numerical value. That means in a physical quantity we must have two type of quantities, numerical value as well as unit, multiplication of these two. That will represent a physical quantity, right? क्लियर है? सो नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी में अगर मान लो हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड वी आर से
changing its unit. So what will happen? So in case of this, if we are changing unit, then its numerical values may change. Right? For example, we are converting 1 meter into say 100 centimeters. So in centimeters. So numerical value will be now 100. Earlier it was say numerical value 1, but now in case of centimeter, numerical value is say 100. So we see that if we change unit, then there may be say change in numerical value. Physical quantity will remain same. That is say 1 meter and 100 centimeter, both are say same physical quantities, same amount, same nature. So from here we can conclude a relation which we will use. This relation is say numerical value in say first unit, and then unit product, the product of these two, then product of say numerical value in second unit and unit. Right? So this is a important relation, and we will use this relation in a chapter, next chapter, that is called say unit and dimension. In unit dimension, this relation is very useful, right? So, but we should understand here that this type of relation holds, right? Now we will discuss physical quantities, two types, that is say scalar and say vector. So there are say two types of physical quantity which we have to study in class 11 syllabus, and these two types of quantities are called scalar and vector quantities, right? So in case of scalar, in case of say scalar quantities, we will see that scalar quantities. So what is say scalar quantities? Scalar quantities are those quantities which has only magnitude and no direction. So the quantities which have only magnitude but no direction. The physical quantities which have only magnitude but no direction, those physical quantities are called scalar quantities. For example, mass, speed, direction, etc., distance, etc., right? Because this distance has got no direction, speed has got no direction, and mass has got no direction. So only magnitude is there. Because suppose we are purchasing 10 kg rice, then we don't see any direction of this for this 10 kg mass of rice, right? So there is no direction. So only magnitude, right? So that is called say scalar quantities. Next, we will understand vector quantities, right? So what are say vector quantities? In vector quantities, we will see that they are say these are say physical quantities which have say direction as well as magnitude. So the quantities which have both magnitude as well as direction, the quantities which have both magnitude as well as direction, and which obey the laws of vector algebra or say vector addition, subtraction, multiplication, etc., are called vector quantities. So in case of say vector quantities, so there are say some quantities, some physical quantities which have both, that is say magnitude as well as direction, and it obeys the laws of vector algebra, that is say vector subtraction, vector addition, vector multiplication, right? So the physical quantity which have both magnitude as well as direction and which obeys the laws of vector addition, subtraction, multiplication, etc., are called vector quantities. So in vector quantities, we will see that there must be three types of requirement, right? It must have magnitude, it must have direction, and it
should obey the vector laws. So there are three requirements for the vector quantities, right? For example, current, we will see that current is not a vector quantity because current has got magnitude as well as direction, but it doesn't obey the laws of vector addition. So current is not a vector quantity, but still it has got magnitude as well as direction. Now we will see some example of vector quantities. So this is say displacement, velocity, force, acceleration, right? So these are say vector quantities. So in case of displacement, we use a symbol S vector. In case of velocity, we use V vector. In case of force, we use say force vector. In case of acceleration, we use symbol A vector, right? So these are called vector quantities. So if we have to represent a vector, then for representation a vector we use an arrow. But if we have to write a vector quantity mathematically, then we will use a letter. Suppose velocity, so we will use the V letter and with some arrow above this V. If we are dealing with say force vector, then F is for force and arrow represent a vector, force vector. Similarly, acceleration, later will be A and above there will be an arrow, that is called say acceleration. These are say called how a vector is written. So a vector is written like this. A velocity vector will be written as V vector like this. But we will see that how a vector is represented. Then we can say that a vector is represented with an arrow. So a vector is represented by an arrow. The size of arrow represents magnitude of vector. So size of arrow gives magnitude of vector, and arrowhead gives the direction of vector. So if there is some arrow, then we will see that this arrow has got head point. So this is called H, head point, and there is a behind part that is called tail. So there will be tail and head, two parts is there, right? And this direction of this arrow will show the direction of vector quantity pictorially. So this is called say pictorial representation of a vector. A vector can be represented by an arrow. Now this vector has got magnitude as well as direction. So this magnitude part is say P. So this since it is a physical quantity, so this P will represent a magnitude, and we can write this as say vector symbol. So if P vector is say a vector symbol, then if we apply two modulus sign, then it is called say its magnitude. So if there is say a vector, then we are applying two modulus sign, so that means it is a magnitude. It gives a magnitude. Now this for this vector, magnitude of vector is also defined as modulus of vector. So we can say it as a modulus of vector. So we can say it modulus of vector. So how so this symbol is represents a modulus. So we will see that this symbol represent modulus. So this symbol represent modulus. Modulus is the size of that quantity. Suppose we are taking -2 and we are applying some modulus sign, it will be say 2, and if we are taking say 2, so this modulus is say 2. So modulus we can say that suppose we are purchased something in 100 rupees and we have sell it say 80 rupees, there will be say loss of say 100 minus 80, that is 20. There will be say loss of say 20, right? But if we see the change in value of that quantity, so this change of any quantity is say final value minus initial value. Final value is say 100, final value is say 80 and the initial value is say 100. So this change is say minus 20. So here change is minus 20, but this minus represent loss. So actual अगर loss पूछा जाएगा तो we will say there will be loss of 20. Similarly, if there is some loss of 2, so
change value is say -2, but we will say that loss is 2. So modulus is something this which makes a quantity positive, right? So this is say modulus meaning. Now this vector is represented with an arrow, and for this arrow, suppose it starts with the A letter and ends at B. So this tail is A and head is B. Then this AB vector is the AB is called vector quantity, and it will be say written as say AB or by P letter. So by this P letter we can say this AB vector or P vector. This is a vector quantity. Now this magnitude will tell us what type of quantity is this, right? Say if magnitude of that physical quantity is say 10 Newton, then we can say we are dealing with force. So it is say force. If it is say 10 meter, then it should be displacement, and if it is say 10 meter per second, then it should be velocity, right? So unit and numerical value. Numerical value will see the size of that vector, and unit will tell us which quantity we are dealing with, right? Force, displacement, or say velocity. So these are say a representation of a vector. Now this suppose some vector is showing say right direction. So this is say a right direction, and that vector is say A vector. Then for this left direction, this vector may be -A. So there is say opposite vector of this A. So if A is the vector, then -A is called opposite vector. So opposite vector magnitude should be equal and direction should be opposite. So it is say positive direction, then it is in say negative direction, right? So this is how a vector is represented. Clear है ये? So modulus of P, that is called say magnitude of a vector, and for this modulus we will see that symbol is say P vector within two parallel lines. So that represent modulus of 2 is 2 and modulus of -2 is 2. So modulus of this P vector, this gives magnitude of that vector. Now this vector has got two parts. One part is say P, that is say magnitude, and the second part is P cap. So this P cap is direction. So this P cap represents direction. So P is say magnitude and P cap is its direction. So a vector will have magnitude as well as direction. For example, if we are representing force, so that force will be written as say 10 Newton I cap. So this 10 Newton is say magnitude of that force, and I cap is the direction. I cap is the direction of positive x direction. So this I cap is called unit vector, which represents direction. So a vector will always have two parts, magnitude as well as direction. We will see it how it is written later. So next we will see vector has got direction, then how direction of a vector is written or spelled or told. So that is called direction sense. So direction किस तरह से बताया जाता है? For this we will use north, south, east, west. Suppose a new letter. So we know that this new letter, all terms north, east, west, south, these represent directions, right? So this upper side is say north side, and the downward side is say south. Left, right side is say east, and left side is west. So suppose a vector is there, and that vector is this one. So this one is a vector, right? This one is a vector. So and this vector makes angle of say 45 degree. It makes an angle of 45 degree. So in this case, we have to tell it's a direction. So since it is just bisecting northeast direction at 45 degrees, so it is simply called northeast, or it can be called east north, right?
again we can completely say it 45 degree north of east, and 45 degree north of east, this side we have to go, right? Or we can say 45 degree east of north, because here again we will see it makes an angle 45 degree, so we can also say 45 degree east of north. So this is how a vector is direction can be written, right? Next we will see another vector, and that vector is say directed at 60 degrees. So it is makes an 60 degree, so its direction is called 60 degree north of east, and it makes 30 degree with the north, so it will be called 30 degree east of north. So from this way we can define a vector direction. So this is called say direction sense. Next we will see the triangle of vector addition. Now we will understand how a vector is added. For this there is law that is called triangle of vector addition. So for this triangle of vector addition, triangle of vector addition, we can see that in this law we can add two vector quantities, right? It is addition of two vectors, that is called triangle law. So for addition we use a triangle. So we make a triangle in where the two vectors are represented by the two sides of the triangle, and the third side of the triangle will be the addition resultant of A and B, right? Two vectors. So suppose we have to add two vectors A and B, then the C is the called addition resultant. This is called addition resultant of vector A and B. So this C vector is equal to A vector plus B vector. That is called vector sum. So this is called vector sum or addition resultant of two vectors, right? So triangle of statement we will see. For this statement we will see that if two vectors are represented by the two sides of a triangle taken in same order, so it should be say taken in same order. तो अगर ये same order में है, taken in same order, then their addition resultant or vector sum is represented by the third side of the triangle taken in opposite order. So here we will see that this vector quantities A and B are A and B, two vectors are in same order, and the third is say in opposite order. So in this case we will see that there will be say two type of vectors A and B. So suppose we are we are taking say two vectors A and B. So we are taking two vectors A and B, right? And we are adding these two. So in same order means when A ends B start, right? So that means tail of head of A, so this head of A matches with tail of B. In this case we can see that this head of A matches with tail of B. That means say same order. When A ends B start, right? ये आ रहा है समझ में? क्लियर है? सो इसमें क्या होता है कि जब A एंड होता है यहाँ पे, तो वहीं से फिर हम लोग B को स्टार्ट करते हैं, राइट? तो इसमें टेल और हेड मैच करता है, राइट? सेम पॉइंट पे मिलते हैं, टेल एक का टेल और दूसरे का हेड, राइट? तो दीज आर कॉल्ड सेम ऑर्डर, राइट? नाउ अगर किसी दो वेक्टर का हेड दोनों हेड मैच कर रहा हो तो फिर वो अपोजिट ऑर्डर बोले जाते हैं. जैसे यहाँ पर सी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो सी का हेड है और बी का भी हेड है, राइट? या ए पॉइंट पे देखोगे तो दोनों का
टेल मैच कर रहे हैं, राइट। तो अगर सिमिलर मैच कर रहा हो तो फिर ये अपोजिट ऑर्डर माने जाते हैं। इस केस में हम लोग जो थर्ड वेक्टर लिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एडिशन रिजल्टेंट। दैट थर्ड वेक्टर इज से सी वेक्टर, एंड दिस सी वेक्टर इज एडिशन रिजल्टेंट, एंड ऑर्डर अगर देखा जाए तो ऑर्डर विल बी से opposite of this A and B, right? So this C is of say opposite order, right? So A and B are of same order and C is of say opposite order, right? So here this C is called addition resultant, and it is say written as say A vector plus B vector sum, right? Another example we have written here. Here again we will see that A ends and B starts, and C is of say opposite order. Again here C will be say A plus B. So this type of example we may have in case of vector addition, triangle of vector addition. Clearly triangle of, right? तो इस ट्रायंगल लॉ में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो C है, दिस C should be equal and should be less than A plus B. अंकल, यानी ये A plus, अंकल नमस्ते। हाँ बोलिए। अंकल मैं कह रहा हूँ अंकल, आप अभी तो नहीं जा रहे ना? नहीं, 10 बजे। तो इसमें क्या होगा, C will be say less than A plus B, तो A और B से कम होगा C, या फिर उसके बराबर होगा, राइट। तो इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जो एडिशन रिजल्टेंट है वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम से कम हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, राइट। इट डजंट मीन दैट C इक्वल्स टू ऑलवेज A प्लस B। तो C इक्वल टू ऑलवेज A प्लस B इफ इट इज से कॉलिनियर वेक्टर्स, राइट। कॉलिनियर एंड A and B sum is opposing C, राइट। तो दिस इज से तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी जो होते हैं उसका एडिशन रिजल्टेंट वो उनके सम ऑफ मैग्नीट्यूड से कम भी हो सकते हैं, और इक्वल तो होते ही हैं अगर दोनों ए और बी सेम डायरेक्शन में। सो अब हम लोग यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं कि अगर मान लो ये जो तीन वेक्टर है इनको हम लोग कुछ इस तरह से ले रहे हैं, इनको हम लोग ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग दिस, कुछ इस तरह से ऐड कर रहे हैं कि तीनों सेम ऑर्डर के। तो इफ ए बी एंड सी आर इन सेम ऑर्डर, क्या होगा बताना, इफ ऑल दिस आर इन सेम ऑर्डर? जीरो। हाँ, जीरो, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए, देन बी स्टार्ट एंड देन सी टेक्स, तो वी आर रीच्ड हियर, सो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, तो सेम पॉइंट दैट मीन्स नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। और इफ वी आर डीलिंग विद से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, so we can say that if A, B, C are in same order, then sum of this A vector, B vector plus C vector will be 0. Now 0 is magnitude of this vector, but we represent 0 as null vector by writing an arrow over this, because we are dealing with a vector, so this is called a null vector or 0 vector. That means a vector having no magnitude, इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, और एनी आर्बिट्री डायरेक्शन जिनके साथ ऐड कर रहे हो उसी का डायरेक्शन मान लो, ये नहीं मान लो, कोई का डायरेक्शन भी नहीं होता, तो एनी आर्बिट्री डायरेक्शन, नो मैग्नीट्यूड एंड एनी आर्बिट्री डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि सपोज ऐसा ये हो रहा है कि तीनों का सम जीरो अगर है, इन दैट केस वी विल सी दैट सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सो दैट मीन्स A plus B should be greater than C. Similarly B plus C should be greater than A, and similarly C plus A should be greater than or equal to B. यहाँ पे इक्वल कब आएगा, कब आएगा इक्वल बताना? जब A plus C. So if A, B, C are collinear, so we can say that if A, B and C are collinear,
तो ए बी सी अगर कॉलिनियर है तो ऐसे केस में हम लोग क्या देखते हैं, और इनका सम जीरो हो रहा है, दैट मीन्स ए और बी सेम साइड में होंगे, और ए और बी का और सी जो है इसके जस्ट अपोजिट होगा सेम लेंथ का, तो सी विल इक्वल टू ए प्लस बी। तो कॉलिनियर के केस में इनका सम जीरो हो सकता है। सिमिलरली अगर हम लोग नेट फोर्स जीरो देख रहे हैं तो दैट बॉडी को हम लोग इक्विलिब्रियम मानते हैं। इफ योर बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, और नेट फोर्स जीरो होने से उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होता है, राइट। इन दैट केस आल्सो वी सी दैट if there are say three forces F1, F2 and F3 and the sum of these three forces is zero, then it will be a vector triangle with a F1, F2, F3 in same order. So next we will understand a law that is called polygon law. So in polygon law we will see that if we are adding four vectors, say A, B and C, so if we are adding four vectors A, B and C, so in that case all these four vectors A, B, C are of same order. तो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट वेक्टर होगा वो सपोज ए वेक्टर है, देन देयर विल बी से बी वेक्टर एंड देन विल बी सी वेक्टर एंड देन देयर विल बी से डी वेक्टर। तो दिस ऑल दिस फोर आर इन से सेम ऑर्डर, ये सेम ऑर्डर में है। और ऐसे केस में अगर हम लोग देखें तो पॉलीगॉन लॉ से क्या होता है कि इन चारों का जो सम होगा दैट इज कॉल्ड एडिशन रिजल्टेंट, राइट। तो दिस एडिशन रिजल्टेंट इज द vector sum of all the forces. So these forces are called these vectors are called components. इनको components भी बोला जाता है, ये भी सी डी को इनके components बोले जाते हैं वेक्टर के, राइट। कंपोनेंट वाली बात हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट। तो अब इसमें है क्या कि यहाँ पे ट्रायंगल लॉ से आता है, दैट मीन्स ए और बी को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ट्रायंगल लॉ से वी विल गेट सपोज वी आर अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ, सो व्हाट विल हैव, क्या होगा यहाँ पे बताना क्या होगा, लाउड ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, नॉट ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। नाउ दिस इज ए प्लस बी and this is say C, so this side, third side, this is again triangle law. So what will be this third side? A vector plus B vector plus C vector. A vector plus B vector plus C vector, right? Then we are adding this D vector. So this R will be A plus B plus C plus D. So that is called addition vector. Clear? So polygon law is nothing but extension of this triangle law, right? It is the vector sum of all its components vectors, right? So this is the polygon law. Clear है ये? So we have understand this polygon law. Next. We will see how two vectors are added, right? So we know that this is called triangle law. So we can apply triangle law, polygon law to calculate addition of this. So for addition of these two vectors, question is that find addition resultant of given two vectors. Right, so we have got two vectors. One is say 5 Newton force towards each direction and 5 Newton force towards north. That means if a body is there, so this body is say undergoing two types of forces. One force is say one force is say towards right and the second is say towards vertically up. That means this particle has got two forces, 5 Newton and 5.
So this particle has got two forces, 5 Newton towards east and 5 Newton towards north. So this particle will move in this direction, right? So if we are pulling same particle body in two directions, then resultant should be this, right? So this is a should be direction of addition. ये हमने आइडिया किया जिस तरह का होना चाहिए, राइट? अब हमें इससे आपको बताना है कि इनकी वैल्यू कितनी होगी. तो इस एडिशन रिजल्टेंट 5 का रिजल्टेंट कितना होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा, आप कुछ बता सकते हैं क्या होगा? व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड? तो आप ध्यान रखना कि जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड जो होगा इट शुड बी लेस देन 5+5, क्योंकि होता है क्या कि 5+5 तब होता है जब ये दोनों ही ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं. तो वैसे केस में एंगल 0 डिग्री होती है दोनों फोर्स का, और वैसे केस में दोनों सिंपली ऐड हो जाते हैं, तब वो मैक्सिमम होती है. बट यहाँ पर ये फोर्सेस 90 डिग्री पे लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट जो होगा वो इट विल बी से लेस देन 10, राइट? 5+5. सो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हमें देखना है. इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू यूज एडिशन रिजल्टेंट. तो ट्रायंगल लॉ एंड Pythagoras law, right? So we will use we will take help of triangle law. So in triangle law, this first vector is say towards right, right? This first vector is say towards right, and the second is say upward. So when first end, the second starts. So we will shift this vector. A vector we will shift it parallel to itself. इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करके ले आएंगे, राइट? इस तरह से ये दो वेक्टर हो जाएंगे सेम ऑर्डर पे, राइट? सेम ऑर्डर पे हम यहाँ पे अरेंज कर लिया, राइट? अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है एंड दिस से फाइनल पॉइंट, ये a+b हुआ, तो ये जो r होगा वो एडिशन रिजल्टेंट हो जाएगा, राइट? सो दिस r इज कॉल्ड एडिशन रिजल्टेंट. तो यहाँ पे r जो होगा वो एडिशन रिजल्टेंट कहा जाएगा. ऐसे केस में दिस r वेक्टर इज कॉल्ड a+b. तो a+b, तो दिस r वेक्टर इज कॉल्ड a वेक्टर प्लस b वेक्टर. अब इसका मैग्नीट्यूड हमें जानना है, तो उसका मैग्नीट्यूड जानने के लिए वी विल टेक हेल्प ऑफ से पाइथागोरस लॉ. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लॉ, दिस रेडियस स्क्वायर sorry, this resultant square will be say 5 square plus 5 square, right? ये हमें पता है ना. तो पाइथागोरस लॉ में कि ये जो स्क्वायर होता है ये इन दोनों के स्क्वायर का सम होता है, राइट? तो इट विल बी से r स्क्वायर विल बी से 25 plus 25, and then we have to take root, so it will give say root 50. Now root 50 we can write as say 5 into 5 into 2, that means 5 will come out, we will say 5 root 2 Newton, right? So what will be magnitude? 5 root 2 Newton. क्लियर है ये, राइट? इसका डायरेक्शन कैसे जानेंगे? तो डायरेक्शन जानने के लिए वी हैव टू टेक tan थीटा. तो tan थीटा इज से अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग अपोजिट साइड कहते हैं, थीटा के अपोजिट, एंड एडजेसेंट साइड एडजेसेंट टू थीटा. इसको परपेंडिकुलर से बेस भी कहा जाता है, राइट? तो थीटा का अपोजिट साइड एंड थीटा का एडजेसेंट साइड. तो दैट अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, दैट इज 5/5, दैट इज से कैंसिल आउट, इट विल बी से 1. So we get that tan theta is 1, or we know that value of tan 45 is 1. That means this angle is 45 degree. That means this resultant is making 45 degree with east direction and 45 degree with north. So this direction is what? What is direction? Northeast. So the addition resultant is 5 root 2 Newton towards northeast. Clear? Huh? Because we are getting 45 degree, na? So and with making 45 with east and 45 with north, so it is say northeast. So this is the addition resultant. Clear है? Next we will add another two vectors. So these two vectors are say find addition resultant of given these two vectors. So here we are getting say two vectors and we have to find addition resultant.
So what will be addition resultant of this two vectors 6 Newton east and 4 Newton north? क्या होगा इसका आंसर? अंडर रूट 52. So for this we have to use 6 square plus 4 square, right? So first of all we will complete. So first of all we will complete say a triangle. So first of all we will complete a triangle. So for this triangle we are using 6 Newton towards east and then 4 Newton towards north, and this third is say addition resultant R. We will use Pythagoras theorem. So this R square equals to again 6 square plus 4 square, and from here R is the under root of this. So 36 plus 16 under root of 52. So this 50 under root of say 52 Newton, square root of 52 Newton is the addition resultant magnitude, right? Next we will see its direction. For direction we will again use tan theta. This tan theta will give opposite side ratio of opposite to adjacent side. So थीटा का अपोजिट कौन सा साइड है बता दूं? थीटा का अपोजिट कौन सा है? सीधे अपोजिट 4 and थीटा का एडजेसेंट 6. So it will be 4/6. Then we will cancel out 2/3. You will 2/3. Now this 2/3 is not a standard result because we can say tan theta value is 1, tan theta 1/√3, tan √3. These are the standard values, right? So we will what will we write it as tan theta equals to 2/3. So what we will do, we will use tan inverse. So now this theta is written as tan inverse. So this is tan inverse is called inverse function. So this is how this type of quantities are written. This is called the inverse function, tan inverse. tan inverse का मतलब इस tan को हम इधर ले जाएंगे तो ये tan थीटा बन जाएगा, बस यही है। दोनों एक ही बात है, आप इसको अलग नहीं मानिए, एक ही चीज़ है। ये है कि tan थीटा का पूरा वैल्यू बता रहा है 2/3 और ये सीधा थीटा की वैल्यू बता रहा है tan इनवर्स ऑफ 2/3। इससे अगर मान लो हम लोग लिखते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 लिखा जाना चाहिए। तीन साइड जाकर tan इनवर्स 1, क्योंकि हमें पता है कि 45 डिग्री, इसका आंसर 45 बता सकते हैं, बट इसका आंसर भी नहीं पता है, इसलिए इसको हम लोग ऐसे लिखकर छोड़ देते हैं। तो ये है तरीका लिखने का कि एक इन्वर्स फंक्शन कैसे लिखते हैं, राइट। यहाँ पे ये थीटा होगा। अब इससे क्या होगा कि जो एडिशन रिजल्टेंट फोर्स है वो अंडर रूट ऑफ 52 न्यूटन हो जाएगा और एट दिस एंगल होगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/3 एंड ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्योंकि इसका डायरेक्शन आप देखोगे तो ये नॉर्थ और ईस्ट के तरफ है, नहीं, क्योंकि इस साइड में क्या होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर नॉर्थ होता है। तो ये जो एंगल बना रहा है ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट बना रहा है, राइट। इट इज मेकिंग से नॉर्थ ऑफ ईस्ट, राइट। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एट थीटा एंगल नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो दिस विल इज द डायरेक्शन। क्लियर है ये, राइट। नेक्स्ट we will find addition resultant of this given three vectors. So we have got three vectors and we have to find addition resultant of the three vectors. So obviously we will use now triangle law, तो है ही, we will use basically polygon law, right, because we are dealing with more than addition of more than two vectors, then we will go for polygon law. इसमें क्या होता है polygon law में, इसमें सारे वेक्टर को सेम ऑर्डर में अरेंज करना होता है, क्लियर। सेम ऑर्डर में अरेंज करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को कनेक्ट करना होता है। इसको सॉल्व करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, फिर 5 नॉर्थ एंड देन 5 वेस्ट। क्या करना होगा, जब 10 एंड होगा तो हम लोग आप करो एक बार आकर, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पर 10, ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं बिकॉज ये वेक्टर में भी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, राइट। और इस 5 को फिर हम यहाँ पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ ले आए, राइट। इससे क्या हो जाएगा, ये सारे सेम ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया, क्लियर। तो सेम ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया। अब इससे क्या होगा कि स्टार्ट पॉइंट ये है और एंड पॉइंट अब ये हो जाएगा, तो ये होगा एडिशन रिजल्टेंट, राइट, स्टार्ट पॉइंट। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या आएगा इसका वैल्यू बताना। पहले जैसा आएगा √50
जो फर्स्ट में हमने बताया था 5 5 का. So here we will see that so this addition resultant is 5 root 2. So here we will see that first we will write 10 Newton, then next same order 5, next same order 5. This will be say starting point, this is say final point, and this joining line is say addition resultant. So this is say 5, so this side will be 5, or this is 5, so this is say again 5, so remaining we are getting here 5, right? So what we are getting? We are getting a triangle. Ultimately we are getting a simple right angle triangle, where in this right angle triangle this is 5, this is 5, so this resultant will be say 5 square plus 5 square. Pythagoras you will again use root 50 meter, right? And it making angle 45 also. So this addition resultant is 5 root 2 Newton towards northeast. Clear है? समझ गए ये? So next we will calculate addition resultant of this given 4 vectors. So now we are getting say 4 vectors. So find addition resultant of this given 4 vectors. 10 east, 5 north, 5 west and then 5 south. क्या होगा इसका आंसर बताना? इसका आंसर बताना 5. Which direction? East. East, towards east, right? So सही बता रहे हो आप. इसमें क्या होगा कि when 10 ends we will take a 5, right? Then we will take 5 west, then we will take 5 south. So this will be starting point and this will say final point. So we will arrange all these 4 vectors in same order, right? So this starting and final initial and final point, this will represent resultant R. Now this is 5, so it will be 5 because we are getting a square. So this R will come out 10 minus 5, that is 5. So R will be 5 towards right direction, that means towards east direction. So for this we will use this polygon law. So using this polygon law we can find value of this addition resultant. So find addition resultant of given 4 vectors. So here we are getting this is say 10, then 5, then 5 west, then 5 south. This is the starting point, this is the final point, this will be say R vector, and this is say 5, so it is still 5, so it will be remaining 10 minus 5, that is 5. So it is say 10 minus 5, that is 5 towards east. So this will be answer. Clear है ये? Yes. राइट. तो ये है ट्रायंगल लॉ जिसके हेल्प से हम लोग या पॉलीगॉन लॉ जिसके हेल्प से हम लोग एडिशन रिजल्टेंट इजीली बता सकते हैं, राइट. इसमें थोड़ा सा जस्ट मैथमेटिक्स का वो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह यूज़ करना होता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर वो बनाने होते हैं. क्लियर है डायग्राम? अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ये ट्रायंगल लॉ से अगर हम लोग कुछ जनरल 2 वेक्टर्स को ऐड कर दें तो कैसे ऐड किया जाता है, राइट. So if we have to add a general 2 vectors A and B at an angle theta, then how we will use? That means we have to find addition resultant to given 2 vectors. So we are getting say 2 vectors A and B, and theta is angle between vectors A and B, and we have to find addition resultant. So in this case we have to find addition resultant of given 2 vectors. क्लियर है ये? Yes. आ रहा समझ में? Yes. तो अब आप यहाँ पे ये देखना, we have got
say two vectors A and B. So this is say A vector and this is say B vector, and this direction will be in direction of A, because अगर ये A है तो ये डायरेक्शन A का होगा. That means this B is making some angle this A direction with theta. यहाँ डॉटेड लाइन दिखाने का मतलब ये A का डायरेक्शन है, ऐसे ये थीटा एंगल बना रहे हैं. That means एंगल बिटवीन A and B is थीटा. ऐसे में आप ध्यान रखो कि किसी भी दो वेक्टर का एंगल हम लोग तब बताते हैं जब दोनों का टेल मैच करे. तो अगर A को हम लोग यहाँ पर शिफ्ट करके लाते हैं तो हमें पता है कि A का टेल और B का टेल दोनों का मैच कर रहा है. इससे जो स्मॉलर एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन A and B. क्लियर? सिमिलर, या फिर if say head of both vectors matches a single point, then this smaller angle is called angle between these two vectors. आया समझ में? राइट. तो इस तरह से A और B के बीच का एंगल थीटा बना जाएगा. समझ में आ गया? तो ये मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे एंगल थीटा कैसे है, क्योंकि हो सकता है आपको लगे कि अरे एंगल थीटा तो नहीं लग रहा, आपको ये एंगल थीटा होना चाहिए. नहीं, तो एंगल ये थीटा नहीं है, बल्कि इस ए को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से दोनों का टेल मैच करेगा और ये है थीटा. तो यहाँ पर थीटा ए और बी का एंगल बना जाएगा. नाउ इनका हमें एडिशन रिजल्टेंट चाहिए. अब अगर हमें एडिशन रिजल्टेंट चाहिए तो वी नीड से वेक्टर ए प्लस बी, राइट. सो फॉर दिस एडिशन रिएक्शन this R vector is the addition resultant of A and B. So this is called vector addition, right? तो ये addition resultant है. उसके लिए we will construct some triangle, right? For this we are choosing AB. So we are taking a triangle ABC, right? In this triangle AB is taken as side A, vector A side, and BC is say side of vector B. तो ये B represent कर रहा है BC. And this AC will be the third side, that is called addition resultant. Clear? So here we see that we will first complete triangle law, right? So for this we will select A vector. When A ends, B start. So we shift this B at this point, right? Because मैंने कहा है कि A vector may be shifted parallel. तो B को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, right? तो ये parallel flow ले है. इससे क्या होगा, ए और बी सेम ऑर्डर में हो जाएंगे. क्लियर है? ये यार है समझ में? Yes. तो ए और बी सेम ऑर्डर में जाएगा. अब अगर ए और बी सेम ऑर्डर में हो गए तो वैसे में व्हाट वी सी दिस इज आर इज द एडिशन रिजल्टेंट. तो दिस इज द आर इज द एडिशन रिजल्टेंट, थर्ड साइड, राइट. नाउ दिस आर इज द एडिशन रिजल्टेंट ऑफ दिस ट्रायंगल एबीसी. क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब आप ये देखो कि यहाँ पर ए और बी जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है. दैट मीन्स ये 90 डिग्री नहीं बना रहा है. यहाँ पे राइट हैंड ट्रायंगल में फिलहाल नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या किया जाएगा, वी हैव टू सम मेक कंस्ट्रक्शन, राइट. दैट मीन्स जो हमने ट्रायंगल लिया ए बी सी, उस सी से ए बी के डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा. ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है और इस जो ए बी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो इससे जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो पॉइंट डी होगा, राइट. तो सी डी एक तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया. अब इससे क्या हो जाएगा कि ए सी डी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, राइट. नाउ और उससे ये आर उसका हाइपोटेनस हो जाएगा. अब इस सी डी क्या हो गया, इस अल्फा इज द एडिशन रिजल्टेंट डायरेक्शन विद ए, कि एक साथ ही कितने एंगल पे अल्फा हमें रिजल्टेंट मिल रहा है एडिशन, वो इनिशियल डायरेक्शन ए वेक्टर के साथ कितना एंगल पे होगा. तो अल्फा का जो अपोजिट साइड है वो क्या हो जाएगा, सी डी, और अल्फा का जो एडिशन साइड है वो ए डी हो जाएगा, राइट. ए डी, राइट. तो सो फ्रॉम हियर we will proceed for its calculation, right. So for this we have to find CD length and we have to find BD length, right. So for this what we have, ये आप समझ लो कि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से ये ट्रायंगल लॉ का काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिलता है. ये जो लास्ट में मिल रहा है ये रिजल्ट कहाँ से आता है, और तो उसका एक तरह से ये प्रूफ है ट्रायंगल लॉ का. क्लियर? तो ये कैसे आ रहा है तो इसको समझ लेते हैं. और यहाँ से हमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी मिलता है, एंड दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड टू फाइंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ बी वेक्टर.
बी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स जो हमें मिल रहे हैं, बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा। तो ये सब अभी हम लोग समझेंगे। सो इसके लिए व्हाट वी सी, we have constructed, we have made a right angle triangle. So first we see that this side is say B, so this BC, this is side is B, and this is say theta angle. So this side we have to find the side opposite to this theta, and we have to find BD, the side adjacent to theta, right? So for this, in this triangle what we see, BCD triangle. In triangle BCD, what we see, BCD, what we see, B is the hypotenuse, we have to find CD length, right? We will use sin theta. तो what will be sin theta बताना है यहाँ पे। sin theta क्या होगा, अपोजिट साइड, थीटा का अपोजिट डिवाइडेड बाई बिगेस्ट साइड, हाइपोटेनस यानी अपोजिट बाई हाइपोटेनस। अपोजिट साइड इज से CD, अपोजिट साइड इज CD, so it will be say CD and this hypotenuse is B, so it will be say BC is say B, right? So from here this CD will be B sin theta, इस B को यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो this CD will be say B sin theta। इस तरह से CD जो मिल रहा है वो B sin theta मिल रहा है, क्लियर है? तो this CD is say B sin theta। नेक्स्ट next we will calculate base BD. For base BD, we have to take cos theta. So for cos theta, this adjacent side by this biggest side, that is say BD by B again. From here BD is say B cos theta. So this is say base BD, right? So इस तरह से we have got this components. तो आगे चलकर हम इसे पढ़ेंगे कि ये कंपोनेंट्स कहे जाते हैं, these are called components. So if we are taking a vector, so yeah, if we are taking a vector B, suppose we are taking a vector B, so if we are taking a vector B and this B makes an angle theta with base, then opposite side is this, right? So this opposite side will be B sin theta and this adjacent side will be B cos theta. So the side adjacent to theta is B cos theta and the side opposite to theta is B sin theta, clear है? तो these are called rectangular components, ये हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे अभी, ठीक है? ये पार्ट हमें पढ़ना भी है, मतलब एक वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिए, ठीक? तो एक तरह से ये आ गया। अब क्या होता है, अब हम लोग आ जाए वापस ये डेरिवेशन पे। इसमें हम लोग क्या पा रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल है ACD, इस ट्रायंगल में हम लोग क्या देखेंगे कि जो AC स्क्वायर है, पाइथागोरस लॉ अगर लगाया जाए तो इस ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस लॉ लगाया जाए तो जो AC स्क्वायर है वो इस CD स्क्वायर और इस AD स्क्वायर के सम के बराबर होगा, नहीं? तो इसके सम के बराबर होते हैं। तो वी आर गेटिंग से दिस AC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, राइट? नाउ दिस AD we can write as say AB plus BD. तो AD is say AB plus BD, AB is A and BD is say B cos theta, ये अभी हमने देखा था, राइट? तो दिस होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और एंड दिस CD से B sin theta होल स्क्वायर, राइट? सो फ्रॉम हियर we see that this resultant square is say we will open it, तो A square plus B cos theta whole square plus twice of A and this B cos theta, right? And this last term is say B sin theta whole square. Next we will open it say A square, so it will be, here we are getting B square and we are getting B square, so B square is common, so here we are getting cos square theta and here we are getting sin square theta, so these two are say added. Now this cos square theta plus sin square theta is value is 1, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है 9th में, राइट? sin square theta plus cos square theta plus sin square theta is 1, ये 10 में पढ़ा है हमने।
प्लस ये 2ab cos थीटा रह जाएगा, राइट। सो अल्टीमेटली हम लोग क्या पा रहे हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड फ्रॉम हियर दिस r कम्स आउट अंडर रूट ऑफ दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. So this is say addition resultant magnitude. Clear? So इस तरह से हमने ट्रायंगल लॉग से एडिशन रिलेटेड निकाल दिया है. क्लियर? तो ये हमें पता होना चाहिए कैसे निकलते हैं, ठीक है. और इसके बाद बस ये लास्ट रह जाता है जिसमें हम लोग इसका डायरेक्शन बताएंगे. क्लियर है ना ये पिछले का? कोई इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं है, ठीक है. सो वी आर एडिंग टू वेक्टर्स ए एंड बी. सो इस लास्ट पार्ट में हमें अगर ट्रायंगल लॉग का देखें तो ट्रायंगल लॉग से हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीट्यूड अगर बताना हो तो क्या बताएंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होल. नहीं तो ये एडिशन रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कहा जाए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द एडिशन रिजल्टेंट. अगर डायरेक्शन बताना हो तो हमें आर का ए के साथ जो एंगल बन रहा है अल्फा, उसका tan लेना होगा. तो अल्फा की वैल्यू बतानी है. उसके लिए या तो हम लोग क्या है बताइए, क्या करना होगा, या तो हम लोग tan अल्फा ले या फिर sin अल्फा ले. हमें अल्फा चाहिए तो हमें tan अल्फा की वैल्यू से पता चल जाएगा और sin अल्फा की वैल्यू से पता चल जाएगा. क्लियर? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग tan अल्फा अगर देखें तो यहाँ से tan अल्फा जो आएगा वो आएगा से यहाँ से जो tan अल्फा आ रहा है वो सी डी बाई ए डी होगा. नहीं होगा ना ये tan अल्फा. अब यहाँ पर सी डी क्या है, तो सी डी अगर देखा जाए तो सी डी इज नथिंग बट बी साइन थीटा एंड ए डी इज व्हाट, ए प्लस बी cos थीटा. सो फ्रॉम हियर we can see that tan alpha value is how much, so this tan alpha value is say CD that is b sin theta and AD that is a plus b cos theta. So tan alpha equals to b sin theta by a plus b cos theta. तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हो जाता है. क्लियर है? डायरेक्शन जानने के लिए. और एक तरीका है साइन अल्फा से भी. तो कि अगर tan अल्फा की वैल्यू अगर पता है, सपोज √3 आ गया यानी कि अल्फा इज 60 डिग्री, तो इससे साइन अल्फा साइन 60 यानी √3/2 आना चाहिए. नहीं तो इससे हमें साइन अल्फा से भी पता चल जाएगा. तो साइन अल्फा से पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कि अगर साइन अल्फा लिया जाए यहाँ पे, तो जो साइन अल्फा है इसकी वैल्यू आती है अपोजिट साइड दैट इज से सी डी एंड बिगेस्ट साइड दैट इज ए सी हाइपोटेनस. क्लियर है ये? तो यहाँ पर सी डी क्या होगा बताना, बी साइन थीटा और ए सी के वैल्यू आर के वजह से साइन अल्फा इज हाउ मच, बी साइन थीटा बाई आर. क्लियर? इससे भी हमें इसके वैल्यूज मिल जाएंगे. तो साइन अल्फा से भी अल्फा की वैल्यू हम लोग बता सकते हैं. सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग से साइन अल्फा एंड दिस साइन अल्फा इज नथिंग बट सी डी बाई ए सी दैट इज बी साइन थीटा बाई आर. क्लियर? तो आज का यही तक है लेक्चर. ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग आगे का पढ़ेंगे वेक्टर में. तो दिस इज द लेक्चर 1 ऑफ वेक्टर. थैंक यू.